Bismillahirrahmanirrahim. The object of this program is to address the ACCA, ACMA, MBAs, ACAs and other commerce professionals. The reason is that कि जो भी आप कोर्स में पढ़ते हैं वो no doubt about it, it's very important for next of your life, लेकिन 100% वो important नहीं होता जो आपकी ज़रूरत होती है. जब आप इंडस्ट्री प्रोफेशन से CA या ICMA या ACCA पास करके जाते हैं तो जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप जिसको हम दो लफ्ज़ में कहते हैं कोरे होते हैं. आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो होती है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आपने देखी होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज और ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं पता होती. तो ग्राउंड रियलिटी मालूम करने के लिए अगर हम बात करें तो अगर मैं ACCA की बात करूं तो वो नॉर्मली ACCA वालों ने UK टैक्स पढ़ा होता है. 90% केसेस में पाकिस्तान टैक्स पढ़ा ही नहीं होता. तो अकॉर्डिंगली ज़रूरत इस बात की होती है ACCA के लिए कि वो पाकिस्तान टैक्स भी पढ़े, और इसलिए अगर उसको पाकिस्तान में रहना है तो पाकिस्तान टैक्स पढ़ना लाजमी है अगर उसको CFO लेवल या कंपनी के हायर लेवल पर जाना है. और अगर उसको पाकिस्तान से बाहर जाना है तो नो नीड ऑफ इट, लेकिन अगर उसको पाकिस्तान रहना है इट्स कंपलसरी. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं CA के लिहाज से ICMA को कंपेयर करूं तो आई हैव अपीयर्ड इन बोथ द एग्जाम्स. CA के एग्ज़ाम का पेपर इतना हार्ड था कि ICMA का पेपर जब मैंने उसके बाद दिया तो पहले रफ में पेपर किया, फिर फेयर में फाइनल बहुत खूबसूरती से साफ सुथरा पेपर किया और पहले अटेम्प्ट में पास किया. CA के पेपर की बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह CA का भी फाइनल का पेपर पहले अटेम्प्ट में पास किया, और मोस्ट ऑफ द पीपल CA फाइनल का पेपर भी एडवांस टैक्सेशन का पहले अटेम्प्ट में पास कर लेते हैं. उनका फंसता है तो ऑडिटिंग फंसता है, उनका फंसता है तो अकाउंटिंग फंसता है. तो यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ पेपर विच यू आर अटेम्प्टिंग इन इवन CA. तो अकॉर्डिंगली व्हेन यू कम इनटू द इंडस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है. और अगर मैं CA के कोर्स की भी बात करूं तो इनकम टैक्स फोकस्ड कोर्स है, इनडायरेक्ट टैक्स फोकस्ड कोर्स है ही नहीं वो. तो अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करनी है इवन इफ़ यू आर CA तो ज़रूरी है कि यही करें. इसी तरह से इफ़ आई टॉक ऑफ स्मॉल MBA कि जो MBA फाइनेंस हो, MBA एनी अदर एरिया हो, तो उस एरिया में तो टैक्स की इन डेप्थ नॉलेज ही नहीं होती. और मैं लफ्ज़ शायद ज़्यादा कह गया, इन डेप्थ तो दूर की बात, नॉलेज ही नहीं होती जो रिक्वायरमेंट आपको इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है. और जितने भी लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं दे मस्ट बी अवेयर कि कितनी ज़रूरत होती है टैक्स के एरिया में इन एवरी स्फेयर्स ऑफ लाइफ. जिस तरह से हैदर पटेल साहब ने कहा कि इनवाइस की एंट्री से लेकर हायर लेवल की एंट्री तक हर लेवल के ऊपर टैक्स बीच में आ रहा होता है. और अगर मैं बात करूं विद होल्डिंग टैक्स की तो देयर आर अबाउट 60-70 सेक्शंस ऑन विद होल्डिंग टैक्स. अगर मैं सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग की बात करूं तो हर जगह विद होल्डिंग टैक्स बीच में आ रहा होता है, हमारी मुसीबत सर पे होती है. इसीलिए आपकी बुक के ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है कि देयर इज अ बिग एनिमल एंड यू आर बिलो द सेम, एंड देयर इज अ हैमर which are hitting you in the name of tax. Accordingly, you cannot afford if you are in this area and if you wish to proceed to a CFO level or a even higher level or at even a tax manager level. Accordingly, it's important for all those who want to have a career in tax field or who want to have a higher level of even at the CFO level. You cannot reach without tax. It's important for manufacturers, service provider, FMCGs, trading houses, commercial, importer, and as well as exporter, NGOs and NPOs. अब तो NPO और NGOs के लिए भी important इसलिए हो गया है कि इनकी exemption effectively jeopardized हो गई है अगर वो proper withholding tax का काम नहीं करते हैं. When we talk withholding means several areas, and when we talk withholding means huge cost of doing business and incurring huge costs. So far as the timing of this course is concerned, since most of you are off on Saturday, we preferred that it should be launched on Saturday. It should be proceeded on Saturday. We are expecting that we are going to start from 11 November, that is after about a week's time. And if we thought that other people are interested and want to join from the very first day, तो हम शायद एक वीक उसको prolong further करेंगे. It will be ranging for about 4 months on every Saturday from 3 p.m. to 8 p.m. with about 30 minutes break.
कि tax is tax, cannot be continuously studied. Naturally बीच में prayer breaks भी होंगे. So far as the overview of our tax law is concerned and why we need of this course, कि हमारे यहाँ there are about 26 tax laws जो मैं shortly address करूँगा. There are about 8 items in each tax area which we have to take care, and there are frequent changes. These are the major reasons why we need this course. And if we go into detail, these are the laws जिसके नीचे हम दबे हुए हैं और दबते चले जा रहे हैं. Income tax law and rules, federal sales tax law and rules, federal excise and rules, 4 provinces service tax act जो शॉर्टली अब गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी जा रहा है और किसी हद तक जा भी चुका है. सेवरल रूल्स इन प्रोविंशियल सर्विसेज. सिंध का सेल्स टैक्स लॉ बड़ा सिंपल है कि 2 सेल्स टैक्स लॉ रूल्स हैं. एक मेन रूल है और एक स्पेशल प्रोसीजर रूल इफेक्टिवली है देखा जाए. लेकिन पंजाब सेल्स टैक्स में 12-13 रूल हैं. हर चीज़ का नया रूल, डेफिनेशन का नया रूल, फला का नया रूल, फला का नया रूल. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ. और जो भी ट्रांस प्रोविंस ऑर्गेनाइजेशन है जो सिंध के अलावा दीगर जगहों पे भी काम कर लें, उनके लिए और भी ज़्यादा ट्रांस प्रोविंस सेल्स टैक्स के मसाइल. देयर आर 4 विदहोल्डिंग टैक्स रूल्स जिसमें बलूचिस्तान का अभी इनइफेक्टिव है, सिंध, पंजाब और केपी का किसी हद तक इफेक्टिव है. इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लॉ, फिर 2 WWF, दैट इज फेडरल WWF एंड सिंध WWF, एंड देयर इज अ अपकमिंग लॉ which is Punjab WWF, and in the same manner other province WWF. In the same manner अभी recently हमें सिंध WPPF हमने देखा है फेडरल के बाद, और इसी तरह से 18 अमेंडमेंट की वजह से बाकी लॉज आने वाले हैं. तो दिन ब दिन हमारा वेट, मुश्किल कह लें, वो बढ़ती चली जाएगी और हमारी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी. इसी तरह से फेडरल GIDC है. फिर इसके बाद 2 इंफ्रास्ट्रक्चर सेस. One is the same infrastructure cess which is relating to import and road, and there is Punjab infrastructure cess which we have to take care. Accordingly, these are about 26 laws we have to take care. And unfortunately हमारी गर्दन पतली है, अकेले आदमी हैं जिसको संभालना है, और कल को कुछ मुसीबत आ गई सर पे तो हमें ही भुगतना है. तो आपको कंपनी को कन्विंस करना चाहिए कि कंपनी आपको स्पॉन्सर करे या आपके फ्रेंड्स को भी स्पॉन्सर करे उनकी कंपनियां. और जो लोग ये नहीं कर सकते वो इफ़ दे विश सो अपनी जेब से कुछ अफोर्ड करें तो आपका कैरियर बहुत अच्छा बन सकता है. इसलिए कि इस वक्त फाइनेंस में तो बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे, लेकिन टैक्स में जिस तरह से हैदर साहब ने कहा कि उनको असिस्टेंट मैनेजर चाहिए होता है, नहीं मिलता. और अगर मैं इन लोगों से भी पूछूंगा, आसिफ साहब से, और ये बचाएंगे मजीद पोजीशन कि टैक्स का रेडीमेड असिस्टेंट मैनेजर कहाँ मिलता है. क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रेडीमेड असिस्टेंट मैनेजर होता है? क्या वो इंडिपेंडेंटली काम प्रॉपरली कर सकता है विदाउट प्रॉपर गाइडेंस? तो ही रिप्लाई टू अस, इज इट यस और नो. मामला यहीं खत्म नहीं होता. हर इंडिविजुअल लॉ में SROs, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस, जनरल ऑर्डर, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज टू द क्वेरीज, इंपॉर्टेंट इंटरिम रिलीफ, स्टे ऑर्डर्स एंड लैंडमार्क केस लॉस. यानी इफ वी multiply 26 by 8, we got a result of a very long number of more than 100. Can you do that or not? It's a very difficult task. And can you summarize that law in the shape of study pack? It's a very difficult task. Accordingly, there is a chartered accountant being engaged to do the job, and myself will be supervising him and to do the job. And 15 days before every program, you will have a study pack of a particular subject, so that you can study at home. At least 1 week we'll be giving you the next week material so that you can study rather than just the bare law. So far as the faculty members are concerned, those would be Mr. Hanif Idris, Senior Director Finance, Company Secretary DHL. Then Mr. Shamir, who is now succeeding my seat, who is now head of Group Taxation and Legal Affairs, and previously was associated with Ferguson. Mr. Mahmood Bikia is Senior Tax Manager in A.F. Ferguson and Company. Mr. Jahazeb, who is with us and shortly will be on stage on the rostrum too, he is in Bayer Pharma as Head of Taxes. Mr. Saad bin Khalid, he is a Chartered Accountant and Tax and Compliance and Planning Lead, National Food, and he is also from PwC as a manager.
Mr. Kashif Hafiz, who is a ACMA and former Deputy Director of Finance of ICMAP. Accordingly, variety of people have been given tasked to do the job and to present before your good self, and they will share their experiences in addition to the study package which you would have from our side. So far as the panelists are concerned, which is the beauty of this course, which has nowhere in Pakistan, Mr. Haider Patel, Mr. Asif Haroon, he is here with us at the moment, Mr. Zishan Merchant, Mr. Khalid Mahmood, Mr. Raza, all these are of partner level of Big Four. Mr. Zubair, Deloitte partner, Mr. Arshad, who is here with us, actually now partner Deloitte. Mr. Arshad Shahzad is with us, he is a Celtex consultant and advocate High Court and FPPCI Budget Committee member. These are the people whom we will try to arrange every month on Saturdays for about 2 hours to handle your Q&As of a high level, which might not be been addressed during the class, or you may not have been satisfied for any reason during the class. Crux of the comments by the participants of our workshop, of a high quality workshop, and inshallah we are hoping that these classes would be of the same comments and you will be giving in similar comments. It was an amazing presentation, well prepared, real thanks. Excellent session, spot on every aspect, very useful on even a specific need of each participant. Mr. Kasbati understands the technical need of professionals and deliver complex tax amendments with utmost simplicity. The facilitator and panelists did commendable job in sharing all necessary information. Relevant and practical, a must attend workshop for all professional, and I would say you all will attend along with your friends so far as the middle level tax management course is concerned. These are some of our subscriber of quick commentary service, as well as some of them regularly attend our workshop. So far as the fee is concerned and investment is concerned, and I would not say strictly a fee because it's an investment in assets, investment in employee who are the assets of the company. और अगर वाकई कंपनी चाह रही है कि आपको कंपनी के एसेट्स बनाएं, लायबिलिटी ना बनाएं, जो अनफॉर्चुनेटली कई लोग लायबिलिटी बन जाते हैं और फिर उनको अनफॉर्चुनेटली फायर करना पड़ता है, तो आपको अगर एसेट बनना है तो कंपनी को इनकर करना पड़ेगा, और कंपनी आपको के ऊपर इनकर नहीं करना चाहती तो आपको इनकर करना पड़ेगा अपने आप को एसेट बनाने के लिए. इट डिपेंड्स अपॉन यू टू डिसाइड कि वेदर कंपनी शुड स्पॉन्सर यू, you yourself should take care of this fees, or jointly share the fees, depend upon a case to case basis. This book contain, if I go through that so that it will be easier for you to get the approval based on this book. अगर आप इस किताब पे चले जाएं तो this blue part relates to this middle level tax management course. जो कुछ आपके सामने प्रेजेंटेशन रखी गई है वो 70% इसके अंदर मौजूद है. हमने कोई नई चीज़ या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है जो इसके अंदर लिखा हुआ है इन द शेप ऑफ फ्लायर, एंड वी डिलीवर व्हाट वी से. दिस इज आवर रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह सिंस लास्ट 6 years. So far as the next page is concerned, it's a detailed course. और हमने इस डिटेल कोर्स को डिज़ाइन करने के बाद प्रॉपर सर्वे किया, और सर्वे गूगल सर्वे किया. उस गूगल सर्वे के नतीजे में हमने आवर्स आइडेंटिफाई किए कि व्हाट इज़ योर रियल नीड, विच एरिया यू वांट टू फोकस ऑन, एंड बेस्ड ऑन दैट सर्वे हमारी 3 लोगों की टीम ने मिलके फाइनली डिसाइड किया. वन इज़ Mr. Ayaz, who is ACCA qualified person. One is Mr. Sunab, who is Muchala and Company partner, and myself. We three thought about which area should be focused on and which area should be given how much hours, because this area is difficult to cover in a span of about 72 hours. So we have specifically
sit together and decided किस तरह से इसको लेके चलना है कि लोगों को हम मिड लेवल, नॉट हाई लेवल, बट मिड लेवल टैक्स मैनेजमेंट कोर्स तक पहुंचा दें. एंड देयर आफ्टर देयर विल बी हाई लेवल कोर्स, जो मैं थोड़ी देर में आपको बता देता हूँ व्हाट इज़ दैट, ताकि आप में से कुछ लोग चाहेंगे कि दे विश टू गो फॉर अ हाई लेवल रादर देन अ middle level, or maybe there may be some person in your company who would like to proceed to the high level rather than mid level.